Okay, everybody is almost here. So, Mudit, what did we do in the last class? Mudit, what did we do in the last class? Mudit, not here. Shamet, can you listen to me? Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. तो शमित आवाज नहीं दे रहा, मुदित आवाज नहीं दे रहा, विपिन ने आवाज दिया। चलो विपिन, आप ही बता दो कहाँ थे हम लोग, क्या किया था हमने? सर हम लोग ने स्टार्टिंग में सूडो रेंज डिस्कस किया था अगेन, एंड उसके बाद फिर हम लोग ने उसको फर्दर टॉपिक पे कंटिन्यू, मतलब हम लोग ने उसको कंटिन्यू किया था जो भी उससे रिलेटेड था, तो उस पर कंटिन्यू किया था और फिर लास्ट में सूडो रेंज पे कंक्लूड कर दिया था कि ऐसे सूडो रेंज निकलता। Okay. Sir, we have to start GPS error. Yes, sir. Today we have to start GPS error. Last, what we had done was the speed determination by the GPS receiver. Vipin, correct? Yes, sir. Okay. So उसमें हमने देखा था कि it is using Doppler shift effect. So basically लिखना जो आपको होगा एग्जाम में, that is all in theory. But what theory you are writing, you must understand. So हमने क्लास में बोर्ड पे देखा था, समझा था कि कैसे क्या करते हैं, कैसे होता है. So उसके बारे में पूरी डिस्कशन हुई थी. Yes, sir. Next very important question is of the errors of the GPS. Every device has certain limitations. It is working in a given condition. The conditions change, the behavior of the equipment will also change. विनीत गाड़ी में घूम रहा है. विनीत गाड़ी में घूम रहा लगता है बाहर में कहीं. No, sir. विपिन नहीं, विनीत. Okay. बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. रोड ट्रिप पे होंगे सर. बढ़िया है, क्या मस्ती ना, क्लास भी कर रहे हैं, रोड पे भी घूम. बारिश का मौसम है सर. नॉट डन. सीरियस होकर के पढ़ाई करो तो एग्जाम में इजी रहेगा. इट इज फॉर एवरीबडी, नॉट डायरेक्टेड टू वन पर्सन बट एवरीबडी, द होल क्लास. ऑलराइट, सो remember that every equipment is having certain principle on which it is working, and that principle accounts for certain kind of inputs. If anything of these goes wrong, तो आउटपुट का भी चांसेस है गड़बड़ होने का. There is a possibility that things can, the output that the device is giving you can go wrong. Now we have repeated multiple times, not 1, 2, 3, but maybe 10 times, 20 times right now. What are the inputs required for GPS receiver to calculate the GPS specs? Position and ranging. Range and position. Location of the satellite, the reference station, and the range from there. If any one of these two are going wrong, the fix will be wrong or not. Yes, sir. So then we can look at the factors due to which there can be error in these two things. How the range can go wrong and how the location that we are getting can go wrong. So intuitively you can find out, you can understand, having known कि range कैसे calculate करते हैं and receiver को सैटेलाइट की पोजीशन कैसे मिलती. इस प्रोसेस में कहीं भी कुछ गड़बड़ होगा तो ये एरर्स आएंगे. अगर ये एरर्स होंगे तो पोजीशन फिक्स गड़बड़ होगा. तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस से लोकेशन ऑफ द सैटेलाइट. हाउ द रिसीवर इज गेटिंग द लोकेशन? बाय द नेविगेशन मैसेज दैट इट इज ट्रांसमिटिंग. प्रोसेस समझिएगा.
सैटेलाइट इज ट्रांसमिटिंग नेविगेशन मैसेज, उसमें एफएमआरएस डेटा है, उससे रिसीवर को पता चलता है कि सैटेलाइट कहाँ है। सैटेलाइट ये एफएमआरएस कहाँ से ट्रांसमिट करता है? MCS will upload it through the ground antennas. MCS क्या डेटा देगी उसको? सैटेलाइट में क्या डेटा अपलोड करेगी? वही जो जिस पाथ पे घूम रहा है। किस पाथ पे घूम रहा है वो MCS को पता कैसे चलेगा? तो मॉनिटर स्टेशन रिसीव करते हैं, वो डेटा देते हैं MCS को। तो when we were talking about the एफएमआरएस डेटा, वहां पे हमने बात किया था कि almanac is uploaded every 7 days, which is general constellation information. 2400 सैटेलाइट कहाँ है? But ephemeris is uploaded every 2 hours. Why? Because very precise location is required. तो हर 2-2 घंटे में सैटेलाइट्स को ephemeris डेटा अपडेट की जाती है on the basis of feedback received from the monitoring station. But within these 2 hours, it is possible that the satellite is moving somewhere else. 2 घंटे के लिए बताएगा कि मैं यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ चल रहा हूँ, जो अपलोड किया था। बट उस बीच में हो सकता है कि वो थोड़ा ट्रेजेक्टरी चेंज करे अपना, हो सकता है देयर कैन बी माइनर चेंजेस इन द ट्रेजेक्टरी। दैट मीन्स इट इज नाउ हियर बट टेलिंग दैट आई एम हियर। जो एफएमआरएस से बता रहा था मैं यहाँ हूँ, लेकिन चल रहा है कहीं और। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल एरर और एफएमआरएस एरर। जहां बता रहा है वहां चल नहीं रहा तो ऑर्बिटल एरर, जहां चल रहा है वहां बता नहीं रहा तो एफएमआरएस एरर। दोनों एक ही चीज है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक ही चीज है ना, हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो दिस कैन बी सेड टू बी आइदर एफएमआरएस एरर और ऑर्बिटल एरर। ऑर्बिटल एरर अगर हम एफएमआरएस से देखें, व्हाट एफएमआरएस इज सेइंग, ऑर्बिट इज नॉट देयर, इट इज मूविंग समवेयर एल्स, सो ऑर्बिटल एरर। और यहां से बात करें तो वेयर वी आर नॉट सेइंग दैट, वी आर टेलिंग एफएमआरएस इज रॉन्ग। सो दिस इज ऑर्बिटल एरर or ephemeris error, and this can lead to error in the range calculated ultimately, क्योंकि यहाँ बता के रेंज कुछ और निकालेगा, वहां से कुछ और निकालेगा। So there will be an error in the range because of this wrong location provided to the GPS receiver. How do we calculate the range? How do the receiver calculates the range? C into T. Distance is equal to speed into time. यही फॉर्मूला देखा था हमने। 2 इनपुट्स हैं इसमें, एक स्पीड ऑफ द लाइट, एक दूसरा टाइम। टाइम के लिए कोई पॉसिबिलिटी है एरर होने के लिए? टाइम एरर होगा तो रेंज गलत, सी गलत होगा तो रेंज गलत। So what are the possibilities of the time that is being calculated by the receiver can go wrong? हमने CA कोड का मेथड देखा, how the range is calculated, and for that we had also understood that the satellite clock and the user clock must be same, totally synchronized. But pseudo range के केस में हमने देखा था कि because of clock bias error there remains a difference between the two. तो इसको, इस प्रॉब्लम को हम 2 कंपोनेंट में बोल देते हैं, सैटेलाइट क्लॉक एरर एंड द यूजर क्लॉक एरर। क्योंकि सैटेलाइट का क्लॉक भी अपडेट होना है विथ रेस्पेक्ट टू अ मास्टर क्लॉक। द मास्टर क्लॉक, मास्टर एटॉमिक क्लॉक इज ऑन द ग्राउंड और इसके बेसिस पे सारे सैटेलाइट्स के क्लॉक को अपडेट करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर ऑन द ग्राउंड इज द जीपीएस टाइम
और उस जीपीएस टाइम से जो हमारे पूरे सिस्टम का टाइम है, हार्ट एंड सोल, with that time the satellites are all updated, but there can be difference between the GPS time and the satellite time. Further, there can be an error difference between the satellite time and the user time. So both of these are the sources of error. So please count how many errors we have counted so far. Orbital error, And clock bias error, क्लॉक बायस एरर तो ठीक है, दो कंपोनेंट में इसको तोड़ा ना हमने, एक सैटेलाइट क्लॉक एरर, दूसरा user clock error. यूजर क्लॉक एरर सर। तो तीन हमने काउंट कर ली। नेक्स्ट वन इज समथिंग कॉल्ड प्रोपोगेशन डिले। द रेंज कैलकुलेशन हैज एन एलिमेंट ऑफ c, speed of light. Do we know something called refraction of light? Anyone? Yes, sir. Yes, Ganesh, what is refraction? Sir, when a light enters the atmosphere, it splits into 7 components, something like that. Like, not sure. Sir, bending of light, sir. Bending of light as Due it to change of passes medium. from one medium to the other medium. Bending of the light or changing, that happens because of changing speed. So satellite is some 20,000 kilometer up there. As it is reaching to the receiver, is it passing through the atmosphere of the earth? ऊपर में ionosphere, stratosphere, troposphere, ये सब सारे लेयर्स हैं। ऊपर में डेंसिटी कम है, धीरे धीरे जैसे अर्थ के नजदीक आते हैं डेंसिटी बढ़ती है एयर की। तो व्हेन इट इज कमिंग लाइक दिस, इट गोज, रिफ्रैक्शन होती है उसमें। रिफ्रैक्शन होती है तो वो लंबा टाइम लेता है चल के आने में। उसको वहां जाना है, मैं घूमता हुआ जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। सो दैट is also a source of error, atmospheric delay. The signal is not reaching the satellite directly. एकदम सीधा जो होता है वो नहीं होता, वो रिफ्रैक्शन होके घूम करके घूमते फिरते आती है और उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो रेंज हमारा गड़बड़ होता है। So that is called atmospheric delay. Sir, how do we correct this error? In the next topic, DGPS, we will talk about this. How do we correct this? However, bit of correction is applied in the defense services, the PPS. PPS is using two kinds of frequency, L1, L2. आपने देख लिया है अभी तक, शुरुआत में पढ़ा था। GPS is providing SPS and PPS. तो एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनका प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक थ्रू द एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट। आपको मालूम है कि VHF से हम थोड़ी दूर ही बात करते हैं, 30-40 माइल। MF से थोड़े दूर 300-400 माइल तक काम हो जाता है। HF से बात करते हैं तो 1000 किलोमीटर भी बात कर लेते हैं, 2000 किलोमीटर भी बात कर लेते हैं। So all the frequencies, different frequencies have different characteristics of propagation. Propagation through a medium. तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज है, L1, L2, दोनों का बिहेवियर अलग होगा या नहीं? उसी सैटेलाइट से इसी रिसीवर पे अलग अलग रिफ्रैक्शन होगी। कॉमन सेंस? यस। किसने पूछा करेक्शन का? यस सर, एक बार फिर सर एक बार फिर बता दीजिए। हाँ सर। Different frequencies, different kind of frequencies
behave differently when they are passing through अरे प्रिज्म में हम लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट, तो 7 कलर में बाइफरकेट हो जाता है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्यू कलर्स, 7 कलर्स। तो जब वहां से आ रहा है तो व्हाइट लाइट है, लेकिन प्रिज्म में जब वो घुसता है तो अलग अलग टाइम, अलग अलग बिहेवियर है, सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। बाहर से गई, शीशे में घुसी प्रिज्म में, तो जब यहां से पास हुआ तो सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। तो यहाँ बाहर 7 लाइट, 7 लाइट्स बन जाती है, 7 कलर्स बन जाते हैं। That means all frequencies are getting refracted in a different manner. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Similarly, L1, L2, when it is passing through the same medium, gets refracted in a different manner. तो दोनों अलग अलग रेंज बताता है। एक L1 बताता है इतना रेंज, L2 बताता है इतना रेंज। तो इस डिफरेंस को इंटरपोलेट करके और एरर एक निकालते हैं कि अच्छा, दिस मच ऑफ करेक्शन शुड बी अप्लाइड। इसमें इतना आता है, इसमें इतना आता है, तो इतना डिफरेंस है, मतलब इतना करेक्शन अप्लाई करने की जरूरत। सो डुअल फ्रीक्वेंसी GPS receivers can apply this error because of 2 frequencies, but this is not available to you and I because we are working on single frequency L1. But still everything is not lost. We also have certain kind of other methods by which we can improve our GPS fix. lat long जो हमारा निकलता है उसको हम improve कर सकते हैं. There are other methods which we'll be talking about after this particular class. So propagation delay हो गया. Okay, next one. Are we good? Yes, sir. Okay. The next one is called multipath error. Going to the board. One second. All right, so what is visible to you all? What दिख रहा है? yes, No, sir. sir. No बोला किसी ने? Yes, sir, दिख रहा है. दिख रहा है. Okay. So what happens? Suppose there is the ship which is receiving signal from the satellite. Suppose you are near the shore and there is a building here. Satellite signal is reaching here directly, very good, but some signal may strike and come back here because the waves get reflected from different surfaces. So if there is a building here, it is possible that it is receiving 2 signals, the same signal, this and this are same signal, but reaching to the receiver from 2 different directions. Not going into the details of this causes little bit of error. When the 2 signals are received antenna में, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है और उसके चलते कुछ डिस्टॉर्शन होती है सिग्नल की और उसके चलते रेंज का एरर होता है. So this is called multipath error. This is multipath error. So what we have seen so far is orbital error. Orbital. We have seen satellite clock error.
we have seen user clock error, and we have seen multipath here, multipath error, and we have also seen propagation error or propagation delay. सर ये मल्टीपाथ हमारे शिप पे तो होगा नहीं ना, तो कोई क्यों नहीं होगा? मीडियम होगा नहीं सर, मीडियम तो नहीं कोई होगा। आसपास होगा नहीं, बिल्डिंग जैसे कोई। उनके आसपास नहीं होगा। जब आप नजदीक में होगे, बर्थिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हो, उस समय हो सकता है या नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज योर मंकी आइलैंड। यहाँ पे पीछे में फनल होगा, यहाँ पे कहीं आपने एंटेना लगा रखा है जीपीएस का, यहाँ से सिग्नल आ रही है, कुछ और सिग्नल ऐसे आ सकता है या नहीं? यस। Yes, sir. यस सर। So there can be ship structures which are reflecting some waves which are received by this. So what we should do, installation consideration में क्या होना चाहिए? जीपीएस का एंटेना जब लगाएंगे तो क्या सोचना चाहिए दिमाग में? लोकेशन। Location. That means it should be away from funnel and all that. इसके नजदीक में नहीं लगाए, खुले में लगाए, ताकि इसको पूरा स्काई जो है it is visible clearly. So installation में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि the GPS antenna should be away from any kind of obstructions so that the antenna can see the full sky directly and there are no, as far as practicable, no reflecting surfaces near the antenna. So possible है? Multipath error is possible now? यस। Yes. So take a look at this list and see if we understand this. We are good with orbital error, satellite clock, user clock error, multipath error, propagation delay. All good? बेसिकली सब में एक एक दो लाइन लिखना और कुछ नहीं। सब ठीक है यहां तक? Yes, sir. Okay. Next one, number 6, is something called GDOP. GDOP stands for geometric dilution of precision. Geometric dilution of precision, GDOP. Now, what is this kind of error? This is not necessarily the range error. This is not the location error. This is another kind of error which is caused by the satellite location in the sky. If there are two satellites which are close by, तो एक सैटेलाइट का जो अर्थ पे पोजीशन सर्किल बनेगा, जो रेंज था उसका पोजीशन सर्किल ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं अर्थ के सरफेस पे? यहां से एक कोन ऐसे अगर फेंका रेंज का, तो ऑल द रेंजेस बीइंग सेम, इसका सर्किल बनेगा सरफेस पे, है ना? यहां से अगर Yes, sir. एक लाइट अगर हम बल्ब जलाते हैं तो वो गोल गोल जैसा बनता है ना, फोकस लैंप। तो सर्किल होता है। तो अगर दो सैटेलाइट्स बहुत नजदीक नजदीक है स्काई में, तो उन दोनों का सर्किल नजदीक नजदीक बनेगा या नहीं? Yes, sir. बट अगर दो सैटेलाइट्स दूर दूर हैं तो उनका सर्किल दूर दूर बनेगा ऐसा? Yes, sir.
So this is the reason for the GDOP. GDOP is a function of the geometry of satellites in the sky. If the angle of cut is more, then GDOP is good. We will see what is good, what is bad. If the two satellites are close in the sky, this is accounting for poor GDOP. ये गड़बड़ है. नजदीक नजदीक में सैटेलाइट्स नहीं हो तो अच्छा है, दूर दूर में हो तो अच्छा है. Why is that? This can be understood by your normal experience. When your ship is here somewhere or you don't know where, on the shore there are objects, you can take the range and bearing. मान लो bearing only. So when you take the bearing from this and this is good, or you want to take this and this too. इन दोनों के केस में आपका पोजीशन ज्यादा एक्यूरेट होगा या वाइडर एंगल पे ज्यादा होगा? क्लोज एंगल पे सर क्लोज एंगल पे, वाइड एंगल पे वाइड एंगल पे, वाइड एंगल पे वाइड एंगल पे, वाइड एंगल पे. अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा गड़बड़ है. मान लीजिए दो लाइन ऐसे जा रही है और नजदीक नजदीक में हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहां से यहां तक का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है ना, इतने दूर में. कंफ्यूजन होगी या नहीं? यस. और अगर दूर में होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एकदम शार्प होगा या नहीं? यस. दो लोगों ने कहा था कि नजदीक नजदीक वाले से सही होगा. दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट. व्हेन द टू objects are very close by, the point of intersection is kind of confusing. यहाँ से यहाँ कहीं भी हो सकता है. But if the two objects are wider apart, then you have a very sharp point of intersection, which is the position of your ship. जिन लोगों ने अभी कहा था, दो लोगों ने कहा था कि नजदीक में होंगे वो अच्छा है, प्लीज reconfirm that you understand this, that the two objects which are farther apart gives better position fix rather than two which are very close by. Please confirm this to me. Yes, sir. Clearly understood? एक और मुझको confirmation चाहिए. दो लोगों ने कहा था मुझको. यस सर. Okay. So going by the same thing, so this GDOP, as we said, is bad or poor when the satellites are close and good when the satellites are wider apart. क्या होता है इससे? अभी हमने देखा कि दो सर्कल्स नजदीक नजदीक बन रहे हैं और दो सर्कल्स दूर दूर बन रहे हैं. इस केस में दूर दूर बनेंगे, इस केस में नजदीक नजदीक बनेंगे. तो हम टॉप व्यू लेते हैं. साथ में आपको मालूम है कि जब सर्किल बन रहा है तो रेंज की एरर भी है. इतने सारे हमने ऑलरेडी एरर्स देख लिए हैं. सो देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ प्लस माइनस. तो एक लाइन जो बनती है वो शार्प लाइन एक वैल्यू का नहीं होता, प्लस माइनस हो सकता है. सो व्हाट वी गेट इज नॉट अ शार्प line of circle, but a circle. Let's think that it is completed. There can be plus and minus also, which is the error of the range for various reasons. हमने देखा था प्लस माइनस हो सकता है. दो सैटेलाइट नजदीक नजदीक में रहेंगे तो will they, their circles will be like this. Two satellites close in the sky, their position circles on the surface of the earth will be like this. But if it is wider, they will be like this. Correct or not? Yes. Now here you can compare the point of intersection in this case. Is this the point of intersection?
Is this the possible location of the receiver? क्योंकि point of intersection ही हमारा position होता है. Compared to this, you see this. Which one is more precise? Which one is more precise? Sir, B. B. So wider satellites give better precision. So this one is good precision, or you can say also accuracy. And this one is poor accuracy. That means the accuracy is diluted. Here, this is more or high GDOP. And this one is low GDOP. What is the meaning? यहाँ पे dilution बढ़ गई है. Remember that this is geometric dilution of precision. हम क्या dilute कर रहे हैं? क्या dilute कर रहे हैं हम? What are we diluting? Intersection area, sir. ना dilution, यहाँ नाम में खाली बताओ ना. What are we diluting? Precision. Precision. तो precision dilute कर देंगे तो less precision हो जाएगा कि नहीं? मतलब अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो प्रिसिशन कम होगा. मैंने एक ग्लास पानी में थोड़ा चीनी डाला और उसको डाइल्यूट कर दूंगा तो मीठा कम हो जाएगा या नहीं? डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो मीठा कम हो जाएगा. So if I dilute precision, the precision will go down. So this value when high results in poor accuracy. When GDOP is low, then we get good precision. High GDOP, poor accuracy. Low GDOP, better accuracy. Is it understood? Yes. Yes, sir. Clear. Okay. So these are the errors of the GPS. Next one. Okay. Any questions in the errors of the GPS? Additionally, एक और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, which is datum shift. आपने पढ़ा था datum shift कि दो अलग अलग अगर चार datums हो तो उसमें difference आ जाता है. But that is only applicable when there are two kinds of position. GPS में कुछ, चार्ट में कुछ, तो उसके चलते भी एरर हो सकती है. Ultimately what we want कि अपना पोजीशन चार्ट पे देखूं. जो डब्बे में दिख रहा है मुझको, मैं उसका पोजीशन अपने चार्ट पे डालूं और असरटेन करूं कि मैं कहां हूं. So this can be a possibility. ये GPS का प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, but combination of GPS plus the chart. इसके चलते the seventh can be the datum shift, another added error which can be introduced, which may be introduced when we are using the system for navigation. Any questions? Yes, gentlemen. Prabjot? Okay. So next one is DGPS. As we have already talked about yesterday, probably थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात हुई थी कि आप ऑगमेंटेशन कोर्स करते हैं फायर फाइटिंग का, ऑगमेंटेशन कोर्स करते हैं पीएससीआरबी का, ऑगमेंटेशन कोर्स करते हैं कुछ सिमुलेशन का. सो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, पूरा कोर्स तो नहीं करवाते, बट जो कोर्स आपने कर लिया है उसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं, आपकी नॉलेज और बढ़ा देते हैं. मतलब जो आप कर रहे थे पहले
जितनी क्वालिफिकेशन थी उससे थोड़ा बढ़ा देते। So one term which is used is GPS. Normally what we use, this gives us position, but this has got error in this. GPS is giving position, position has got certain bit of error, plus minus. This error is okay for deep sea. बाहर में जब हम नेविगेट कर रहे हैं, हमारे पास सी रूम थोड़ा होता है, प्लस माइनस हुआ, कोई बात नहीं. But when we come in the coastal area, there can be buoys, there can be submerged wreck, there can be other shallow water depths, etc. So in this situation, in the coastal area, this error can be misleading and it can be dangerous. I don't want कि मेरी जहाज यहाँ पे और बताए कि मैं यहाँ हूँ. अगर बताएगा कि मैं यहाँ हूँ तो मैं खुश रहूंगा कि मैं तो एकदम सेफ चल रहा हूँ, लेकिन जहाज होगी मेरी यहाँ पे. So what we want more accurate position in the coastal regions when we are doing coastal navigation. So this GPS is, since having error, we need to supplement it by something. We need to augment the GPS. So we have augmented GPS. GPS as it was working, जो अभी तक देखा हमने, वो वैसे काम कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करना है ताकि हमारी यह जो एरर है वो कम हो सके. Now how is it done? There are two methods of this augmented GPS. There are two methods. One is called DGPS. The other one is called WAS. DGPS आपने सुना होगा, Differential Global Positioning System. WAS stands for Wide Area Augmentation System. So we are now going to talk about this DGPS, differential GPS. Basically, one more thing you can know, that this is a terrestrial system. That means transmissions and all are happening from land stations. जो जमीन पे stations हैं उनसे transmission होती है इनकी. ये satellite based correction system है, तो long range भी होता है. Augmented system are two types: DGPS, which is land-based system; WAS, which is satellite-based system. Land-based system, short range, not for deep sea, not for deep sea. This can be used for more correction, or even at outer sea. Now, what is happening here? The DGPS has two methods of correction. How the GPS fix that you are getting can be improved. Has got two methods, something called coordinate correction and the second one is called pseudo range correction. These are the two methods used by this. Now what happens in these methods? The first method, let us say on shore,
a normal kind of GPS station is established, what we call as DGPS reference station. This is normal DGPS reference station. Since it is on land, it has got a known latitude and longitude. कोई ambiguity नहीं है, क्योंकि ये जमीन पे है तो इसको कोई अपने latitude longitude का कोई confusion नहीं है. It is having its position which is very well known. But since there is a GPS here, the GPS is taking pics from the satellites, and this GPS is also giving GPS lat long. So this station has got known position, and it is also getting GPS position. Now that we know that GPS has some bit of error, so this and this will have a difference between the latitudes that I'm seeing on the GPS. Here I see the difference of the longitudes that I'm seeing on the GPS. So if we compare these two, we get error. Is it possible or not? Error in the actual position and the GPS position. Is it possible or not? Sir, but how does it know the exact position? How do you know the Greenwich meridian? Greenwich meridian is passing through Delhi. Is it correct? Yes. Greenwich Yes, sir. meridian passes through Delhi, right? No, sir. Mirzapur. Where does it pass from? Where does it pass from? Mirzapur. Greenwich. Mirza. मिर्जापुर. ग्रीनविच मेरिडियन की बात कर रहा हूँ. ग्रीनविच मेरिडियन मिर्जापुर से पास होता है. सर लंदन लंदन Greenwich, sir. So there is a known reference point. Sir, India का Known reference reference point point is on मिर्जापुर land, से निकलता है. imaginary line. उससे 60 miles मैं इधर को आऊंगा. When I come 60 miles this side, so have I traveled 1 degree of longitude? This side, east side, 60 miles अगर मैं चलूंगा तो will it be 001 degree east? उधर जाऊंगा तो 1 degree west. 1 degree is 60 miles, correct? Yes, sir. Yes, sir. So 60 miles मैं अगर आऊं इधर तो there will be another imaginary line which is 1 degree east. उधर जाऊंगा तो 1 degree west. 120 माइल जाऊंगा तो 2 डिग्री ईस्ट. उधर 120 माइल जाऊंगा तो 2 डिग्री वेस्ट. करेक्ट? ग्रीनविच से. Yes, sir. That means the earth has been mapped and we have all the points on the earth mapped with a known location. Only when we are at sea, there is some latitude, some longitude there, but I don't know where I am right now. There is a line passing through that sea. जहां पे बीच समंदर में मैं हूं, वहां पे एक इमेजिनरी लाइन है, बट कौन सी लाइन है आई डोंट नो. मैं पता करना चाहता हूँ जीपीएस. बट लैंड पे तो रेफरेंस वहीं पे, तो कुतुब मीनार तो वहीं रहेगा दिल्ली. और ग्रीनविच से वो कितनी दूर है, दैट इज ऑल सर्वेड, मेजर्ड एंड एवरीथिंग. सो कुतुब मीनार का लैट लॉन्ग पता होगा या नहीं? यस. बट सर वो भी तो हम किसी इक्विपमेंट से ही लेंगे ना, तो जीपीएस ही यूज करेंगे ना. भाई जीपीएस के पहले हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था कि नहीं? यस सर. सेलिंग होती थी कि नहीं? हम स्टार Yes, से अपना पोजीशन निकालते थे
साइट लेते थे, पोजीशन निकालते थे, फिर भी हम अर्थ पे आते थे कि नहीं? अर्थ पे निकालते थे ना? यस सर। तो कैसे हमने बता दिया कि वो जेट्टी जो है जहां मुझको जाना है उसकी पोजीशन ये है, इस लैटलॉन्ग पे पहुंचना है मुझको, हाउ डू आई नो? तो उस जेट्टी का पोजीशन नोन था ना हमारे पास। सर्वेज, मॉडल ऑफ द अर्थ, जियोडेटिक सिस्टम करके हमने अर्थ को मैप कर दिया है ना। यस सर। तो सर्वेज होती हैं, आप बोलते हो कि चार्ट में डेप्थ है, चार्ट में दिखा रहा है कि यहाँ पे 60 मीटर का डेप्थ है, कैसे पता चला भाई? चार्ट में आपने डाला 60 मीटर, कैसे किया? सर्वे सर्वे किया। तो ऐसे ही सर्वे करते हुए, अर्थ के सर्वे करते हुए हमने अर्थ को मैप कर दिया है। मालूम है कि ग्रीनविच से ये यहाँ इतने दूर, इतने लॉन्गिट्यूड पे है, इतने लैटिट्यूड पे है। सो फिक्स्ड लोकेशन ऑफ द रेफरेंस स्टेशन that we know on the earth. I'm not looking at the GPS, but I know from my other experiences, other surveys, that this location is this much latitude, this much longitude. Even if GPS was not there, I know the latitude, longitude of my place. All right. So now is it valid that there is a known location and there is a GPS location? So there will be error between the two. Ana bolo. यस सर। So what happens? The GPS reference station then transmits this error on an MF frequency. इस एरर को जो हमने कैलकुलेट किया था, that is transmitted on some medium frequencies which is received by the ship. शिप ने अपना पोजीशन निकाला था, शिप ने अपना पोजीशन जीपीएस का निकाला था, उसमें जो एरर थी वो प्लस माइनस एरर यहाँ पे लगा के, प्लस माइनस एरर लगा के, और corrected lat long is displayed onto the screen. Simple as that. So do we understand? यस सर। Coordinate correction. बट डीजीपीएस तो लैंड पे रहेगा ना सर? हाँ, डीजीपीएस लैंड पे है, लेकिन ट्रांसमिशन तो हो रही नहीं यहाँ से भाई। आप जहाज पानी में यहाँ से इस, हाँ, यू हैव ए वैलिड पॉइंट। ये जमीन पे है, ये कहाँ पे है? जहाज में पानी सर। ओके, अपना क्वेश्चन बताओ। यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन एंड आस्क योर क्वेश्चन क्लियरली। सर डीजीपीएस तो लैंड पे रहेगा, किसी पोर्ट पे रहेगा ना सर? हाँ एकदम। तो ये कितना रेंज तक वो यूज कर सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो सिंस ये एरर जो थी वो तो इस पोजीशन के लिए थी ना भाई, एकदम सही आपने कहा। दैट मीन्स अगर जहाज में हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत कंपेरेबल एरर चलेगा, थोड़ा और दूर गया यहाँ भी चलेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद इसका करेक्शन वहां के लिए थोड़ी एप्लीकेबल होगा। सो जो आपने जो कहा वो बहुत अच्छी बात है, दैट इट हैज गॉट अ लिमिट। 40, 50, 60 माइल्स के बाद ये रेलेवेंस नहीं रह जाता। जो एरर इस तरीके का जो हम भेज रहे थे, क्या भेज रहे थे? कोऑर्डिनेट करेक्शन भेज रहे थे। दैट इज ओनली वैलिड फॉर शॉर्ट रेंज। द शिप्स विच आर आउट एट सी, उनके लिए ये करेक्शन वैलिड नहीं होता। जैसे जैसे दूर जाती है उसकी वैलिडिटी खत्म होती जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पे ये जहाज जो है, the ship here may be using some other satellites, ये कुछ अदर दूसरे सैटेलाइट्स यूज कर रहा है, तो भी वैलिड नहीं रहेगा। सो इसके लिए दूसरे वाला मेथड इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड सूडो रेंज करेक्शन। सूडो रेंज करेक्शन।
सर सूडो रेंज किसके लिए, डीजीपीएस के लिए, जीपीएस के लिए सर? हमारे शिफ्ट के लिए हमने एक तरीके का करेक्शन लगा लिया। इसने पहले क्या Yes, भेजा sir. था मुझको, पहले क्या भेजा था, क्या करेक्शन, लैट लॉन्ग का करेक्शन भेजा था या नहीं? यस सर। तो वो कोऑर्डिनेट हो गया। यस सर। अब दूसरे तरीके का करेक्शन भेजेगा, क्या करेक्शन होगी? पी 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 करेक्शन सर, थप्पड़ खाओगे। सूडो रेंज, सूडो रेंज करेक्शन। तो बताया ना कि दो तरह के करेक्शन हैं, एक कोऑर्डिनेट करेक्शन और दूसरा सूडो रेंज। लिख के भी अभी दिखाया Yes, था। यस सर। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो पी करेक्शन बोलते हो। सूडो रेंज सर। हाँ, सूडो रेंज करेक्शन। Okay, so next, what is happening? The land reference station is getting the fix from the satellites. जितने सैटेलाइट्स विजिबल हैं सबसे वो रेंज निकालता है। कैसे? तो इसका पोजीशन इज नोन और नॉट, एक्स वाई जेड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, तीनों पता है इसका। अगेन नोन पोजीशन, करेक्ट? यस सर। There are satellites which are transmitting signals, और इसके एफएमआरएस डेटा में इसका भी एक्स वाई जेड पता चल गया। सारे सैटेलाइट्स का एक्स वाई जेड पता चल गया एफएमआरएस डेटा से। यस सर। Okay, now there is C into T, the pseudo range is calculated by the GPS receiver. यस सर। जो प्रोसेस होती है पोजीशन फिक्सिंग के, उसमें सूडो रेंज निकलता है ना। तो यहाँ से सूडो यहाँ रेंज तो तक सर अपना C into T minus delta T हो जाता है ना। हाँ, तो इसमें अभी हमने जो कहा, ओके ठीक है, प्लस डेल्टा टी, दैट मीन्स दिस इज द रेंज दैट वी आर कैलकुलेटिंग, सूडो रेंज, करेक्ट? यस सर, सूडो रेंज कैलकुलेट हो गया। Now there are two fixed locations in the space. एक इसका XYZ is known, एक इसका XYZ is known. तो इन दोनों के बीच का फिजिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली या नहीं? अगर चार्ट पे 2 पॉइंट दे दिए तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हैं। हाँ सर। तो 3D स्पेस में भी निकाल सकते हैं। तो हम एक्चुअल कैलकुलेटेड रेंज होता है जो हम यहां से यहां 2 पॉइंट के बीच का निकालते हैं। दूसरा हमारे पास ये सूडो रेंज है, तो दोनों के बीच में एरर होगी या नहीं? सूडो रेंज में कितना एरर है? दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द कैलकुलेटेड रेंज। मान लो सूडो रेंज ने कहा कि 20,300 किलोमीटर, कैलकुलेट करता हूं तो 20,200 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर का एरर हो गया, करेक्ट? यस सर। So what is done? That for each satellite, सारे सैटेलाइट्स का रेंज करेक्शन कैलकुलेट करता है ये रेफरेंस स्टेशन, एंड दिस सूडो रेंज करेक्शन is transmitted on the same frequencies. Now my ship may be using some of these and some may be not used by this. तो जो का भी अवेलेबल होता है, मैं अपना जब रेंज निकालता हूं सूडो रेंज, उस सूडो रेंज में वो करेक्शन लगा देता हूं और फिर आगे ट्रायलैटरेशन करके पोजीशन निकालता हूं। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द पोजीशन, उसमें जो मैं रेंज यूज कर रहा हूं वो रेंज इज ऑलरेडी करेक्टेड रेंज which is received from the reference station. And these are the, हाँ बोलिए। ये सूडो रेंज की जगह अगर ट्रू रेंज निकाल लें और फिर उन दोनों को कंपेयर करके उसका एरर नहीं तो कर सकते? ट्रू रेंज ही तो है बेटा, ये कैलकुलेटेड अगर हमने किया
ट्रू रेंज तो हम मैथमेटिक्स से पहले निकाल रहे थे अंडर रूट वाला करके। अभी यहाँ पे तो मेरे पास नोन लोकेशंस है ना, तो दोनों के बीच का हमने कैलकुलेट कर लिया। ट्रू रेंज तो ये है, एक तो मैथमेटिकली हो रहा था जहां मजबूरी थी, अब तो मेरे पास दो नोन डिस्टेंसेस है ना, तो ये कैलकुलेटेड जो है, कैलकुलेटेड रेंज इज बेसिकली द ट्रू रेंज। नहीं, यस दो पॉइंट है, दोनों के बीच का एक्चुअल रेंज निकाल रहा हूं ना मैं यहाँ कैलकुलेट करके, तो दैट इज द ट्रू रेंज। यस और इस ट्रू रेंज को जब हम कंपेयर करते हैं सूडो रेंज से, तो दोनों के बीच में गैप आता है, विच इज द एरर। तो ये एरर ट्रांसमिट कर दिया जाता है शिफ्ट के लिए। शिफ्ट विल अप्लाई दिस रेंज एरर in their pseudo range and then do the trial iteration, then display the position. यस सर मतलब जो डीजीपीएस का सिग्नल है उसको भी जीपीएस रीड करता है, मतलब कंटिन्यूसली। Yes, तो जीपीएस नहीं रीड करता। आपके जहाज में अगर जीपीएस लगा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा। आपके जहाज में क्या चाहिए? जीपीएस जो है वो सैटेलाइट से काम करेगा। डी पार्ट जो है वो ये वाली सिग्नल रिसीव करेगा शोर से। कौन सी सिग्नल? एमएफ के सिग्नल। डीजीपीएस रिसीवर इज डिफरेंट देन द नॉर्मल रिसीवर। नॉर्मल जीपीएस ओके, मतलब सैटेलाइट। तो डीजीपीएस से सैटेलाइट से नहीं आएगा सर सिग्नल? कम अगेन? डीजीपीएस में जो शिप पे डीजीपीएस अगर लगा रहेगा तो उस पे सैटेलाइट का सिग्नल जो है वो नहीं आएगा, ओनली जो नहीं। शोर का डीजीपीएस आएगा उसका सिग्नल आएगा एमएफ का। एग्जैक्टली। जहाज का डीजीपीएस जो है उसमें जीपीएस पार्ट है वो सैटेलाइट से काम करेगा, और जो डी पार्ट है डिफरेंशियल वो यहां से करेक्शंस उठाएगा। सो अपना ओके सर। पोजीशन यहां से, करेक्शन यहां से, आउटपुट करेक्टेड। अंडरस्टूड? रिमेंबर इट इज ऑगमेंटेशन सिस्टम। जीपीएस तो काम कर रहा था, हम उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जीपीएस, डीजीपीएस का जीपीएस पार्ट है वो तो सैटेलाइट से काम कर रहा है, बट यहां से हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं, सो दैट आई गेट बेटर पोजीशन। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Okay. So this concludes our GPS topic. मुबारक हो, थोड़ी लंबी टॉपिक थी। अब इससे भी लंबा टॉपिक अगले क्लास में शुरू होगा, which is gyro compass. Next class onwards. ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. टाइम भी हो गया, तो Bye, sir. 7, 8, 9 classes में भी for gyro compass. Be ready to be asking questions. Lot many questions. मैं जवाब देने के लिए तैयार रहूंगा, because lot of thinking to be done in that. Imagination चाहिए होता है. We'll try to see. चलो then, bye bye. Signing off. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a good day.